Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am you. Today we will be discussing the most challenging and least understood of the forms of dyslexia, known as double deficit dyslexia. If you're a teacher or a parent or a student trying to deepen your understanding of reading difficulties, this video will help you recognize the signs early and support learners effectively. Now, let's see what is double deficit dyslexia. Double deficit dyslexia occurs when a child has difficulties in two critical areas of reading. Number one, phonological awareness, in which difficulty understanding how sound maps to letters and trouble breaking words into sounds, blending sounds, or decoding unfamiliar words. Second is the rapid automized naming, RAN, in which there is difficulty quickly naming letters, numbers, colors, or familiar objects. This RAN affects reading fluency and speed. ये दोनों हम पिछले एपिसोड्स में वीडियोस में मैंने कवर कर दिए हैं, but this time both are combined in double deficit. Both these forms of dyslexia are combined together. So when both deficits are present, reading बहुत मुश्किल हो जाती है. It becomes significantly harder because the child struggles with both the foundational decoding. उसको उसकी जो foundation है decode करने की जो उसको सलाहियत है वो भी नहीं होती, कम होती है, and the ability to read smoothly and quickly. Now this makes double deficit dyslexia more complex than other types. Up, what are the causes of this double deficit dyslexia? While dyslexia is not caused by low intelligence or poor teaching, research has identified several contributing factors. Number one, neurological differences. Now, brain imaging shows variations in areas responsible for language processing and rapid naming. फिर है नंबर टू फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, जो कि डिसलेक्सिया ऑफन रन्स इन फैमिलीज. अगर पेरेंट्स को हो या सिबलिंग को हो तो डिसलेक्सिया का टू हैव डिसलेक्सिया इन अनदर चाइल्ड और सिबलिंग becomes higher. Number three, early language delays, late talking, limited phonological awareness, or delayed exposure to language rich environments can increase the likelihood of deficits in both areas. Now, this is also very important कि बच्चा एक तो बोल रहा है लेट, चलो वो तो उसका है, लेकिन समटाइम्स देर आर एनवायरमेंट्स जहाँ पे बहुत खामोशी होती है और बच्चे से बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं. दैट ऑल्सो अफेक्ट्स स्पीच डिलेज में आता है. सो हमेशा बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे ज़्यादा लोग बोलने वाले हों उसके साथ. Then number four is weak working memory. Children may struggle to hold sounds in mind long enough to decode them. उनका साउंड जो होल्ड करने की ताकत है वो ब्रेन की ज़रा कम होती है कि वो साउंड को होल्ड नहीं करते थोड़ी देर के लिए. Now, none of these causes are the child's fault. This simply highlight how the brain processes information differently. ठीक है. फिर हम आते हैं उसके symptoms and classroom examples पे. Now, number one, extremely slow and effortful reading होती है. Even common words take long to read. मैंने पहले भी एक example दी थी कि a child reads the, then pause, cat, then pause, jump, then pause, over, pause, the, pause, fence. Now losing the flow of the sentence, वो flow टूट जाता है. Number टू है difficulty decoding new or complex words. अगर decode करने में उन्हें बहुत time लग जाता है. Words such as fantastic or photograph or international, they becomes a little overwhelming for these kids. इस तरह के बड़े बड़े words जो होते हैं. अच्छा, struggle with rapid naming tasks है. When shown letters, numbers or colors,
द चाइल्ड हेजिटेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिफोर नेमिंग दैम। उसको पता है, लास्ट टाइम मैंने आपको आर्यन के बताया था कि ही नोज, बट ही टेक्स सम टाइम। उसकी जो वर्किंग मेमोरी से उसकी जो है आने में उसको टाइम लगता है। सो ही टेक्स सम टाइम एंड उसका प्रोसेस होता है, एंड देन ही कैन टेल। ऑल्दो ही नोज कि ये रेड कलर है, ये 9 नंबर है फॉर एग्जांपल, या ये कैट लिखा है या बैट लिखा है। फिर इनकी प्रॉब्लम होती है वीक स्पेलिंग्स। स्पेलिंग इज ऑफन फोनेटिक एंड इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल जैसे है, वो म्यूजिक को MUSIC की बजाय MUSIK लिख देंगे, या फ्रेंड को FRIEND की बजाय FREND लिख देंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। फिर पुअर रीडिंग फ्लुएंसी, कि रीडिंग बहुत उनकी चॉपी होती है, स्लो होती है, विदाउट एक्सप्रेशन होती है। दिस अफेक्ट्स कॉम्प्रिहेंशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा रीड कर रहा है, जिसको डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया है, बहुत टीचर्स ये कहती हैं कि जी ये क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, या ही इज़ अनएबल टू राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है, वो अपना उसका उसका सारा फोकस रीडिंग पे है, एंड और उसको रीड करने को और डी कोड करने, उसकी जो वर्ड्स को डी कोड करना है, सारा फोकस उसके ऊपर है, एंड नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग। दैट्स वाई उनकी कॉम्प्रिहेंशन भी स्लो हो जाती है। अवॉइड रीडिंग टास्क्स। They may appear, shy or anxious or distracted because reading is mentally exhausting for these kids. उनको नहीं पढ़ना है बिकॉज उनको वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस वर्ड को डीकोड करने में, सेंटेंसेस को रीड करने में, सो दे डोंट वांट टू रीड। अब हमारा आता है कि हाउ वी कैन एकेडमिकली एकोमोडेट दीज किड्स। नाउ डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया, या कोई भी फॉर्म हो डिसलेक्सिया की, it is not a barrier to success. With accommodations, student can perform brilliantly, especially in exams. अब एग्ज़ाम accommodations में नंबर वन, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि एक्स्ट्रा टाइम तो हर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को मिलना चाहिए। नाउ एक्स्ट्रा टाइम शुड बी एट लीस्ट 25 to 50%। इसके इन डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम ये होता है कि सिंस रीडिंग एंड राइटिंग टेक लॉन्गर, एक्सटेंडेड टाइम इवन्स द प्लेइंग फील्ड। मतलब उनको जब टाइम मिलता है, उनको सुकून होता है कि उनके ऊपर प्रेशर टाइम कंस्ट्रक्शन नहीं होती कि ओह मुझे बस ये 1 घंटे में ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज है वो करना ही करना है। नो, गिव देम 2 hours। कोई इसमें the thing which I am unable to understand and cannot comprehend is that why these exams are like so cruel to these kids, कि आप उन्हें 2 घंटा नहीं दे सकते, आप उनको 3 घंटे नहीं दे सकते। मतलब क्या, what's the problem? अगर if the child is diagnosed with any form of learning disability or difficulty, he should be given such accommodations. In developed countries, such kids are given accommodations. In fact, they have a separate exam paper and a separate sitting area. सो एक तो हमने नंबर वन एक्स्ट्रा टाइम हो गया। नंबर टू है रीडर और रीडिंग सॉफ्टवेयर उन्हें प्रोवाइड करें। ह्यूमन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हेल्प्स स्टूडेंट एक्सेस एग्जाम क्वेश्चंस विदाउट डिकोडिंग डिफिकल्टीज। नो, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर जगह कंप्यूटर्स हैं, हर जगह ये सॉफ्टवेयर्स हैं, सो वी कैन गिव दीज इवन इन हायर एजुकेशन, इवन इन यूनिवर्सिटीज़, इवन इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, हर जगह ये प्रोविजंस, ये अकोमोडेशंस इन बच्चों को मिलनी चाहिए। नंबर 3, अकोमोडेशन कैन बी स्क्राइब और स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स। अ स्क्राइब, कोई लिखने वाला उसके साथ हो, मेक्स श्योर द स्टूडेंट्स आइडियाज आर कैप्चर्ड एक्यूरेटली, स्पेशली व्हेन स्पेलिंग बिकम्स अ बैरियर। ठीक है। नंबर 4, सिंप्लीफाइड और चंक्ड इंस्ट्रक्शंस हो। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ना हो, उनको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, उनको 1 2 3 करके नंबरिंग कर दी है। You have to break the instructions into smaller steps, and so that it prevents a cognitive overload. फिर 5, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ऑडियो बुक्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं, टाइपिंग इंस्टेड ऑफ हैंड राइटिंग,
colored overlays if visual stress is present. Now, there should be no penalty for spellings in non language subjects. Marks should reflect content knowledge, not spelling ability. हमारे यहाँ तो अगर साइंस का पेपर है और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके भी नंबर वो काट लेते हैं. सो दिस शुड नॉट बी डन. Quiet, distraction free room. This helps student with naming speed difficulties, maintain focus and reduce anxiety. उनको अलग कमरे में एक साइलेंट और फोकस जगह पे बिठाया ताकि उनका फोकस जो है वो उसके उनके अपने एग्जाम पेपर पे गए. So, double deficit dyslexia may be complex, but with understanding, patience, and the right accommodations, children can thrive academically and emotionally. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share it with teachers and parents who may benefit. Thank you so much. See you soon.